इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और देश के इस डेवलपमेंट के रफ्तार में ये सब ऐसे प्रोफेशनली बेटर रहने में हमारे डेवलपमेंट का अच्छा स्पीड मिलेगा. Globally, the conduct of chartered accountants, particularly who are auditors of public interest entities being those which have a certain stipulation, if I can just go to state them in specific. What are public interest entities, sir? They are, first of all, listed companies, sometimes even unlisted companies, but which have over 500 crore paid up capital, or which are over 1,000 crores of annual turnover, or those with over 500 crores in terms of loans, debentures, and deposits. So these are the public interest entities. So globally, auditors who deal with public interest entities are regulated by independent regulators. I'll just name a few for it. In the United States of America, it's the PCAOB, the FRC in UK, the ASCII, the ASCI in Australia, the IRDA in South Africa, the CPAB in Canada, all of whom are independent regulators. So even in India, on similar lines, we set up, I think in 2018, the NFRA, the National Financial Reporting Authority. The full-time members of NAFRA at present are not members of the institute. So if NAFRA, which deals with auditors of public interest entities, ऑल्सो वन गुड न्यूज़ फॉर CMF फाउंडेशन एस्पिरेंट जो कि ट्रम्प बैच लेकर आया अनअकैडमी जून 22 अटेम्प्ट में, जो कि देना चाहते हैं अपना एग्जामिनेशन. ऑल्सो एलिजिबल फॉर दो स्टूडेंट हु वांट टू गिव देयर एग्जामिनेशन इन दिसंबर 22 एग्जामिनेशन. तो भाई CMF फाउंडेशन स्टूडेंट 9 मार्च 2022 को आपका ट्रम्प बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. इसको इनरोलमेंट कराइए, बहुत एम्पल ऑफ बेनिफिट मिलेगा. इसी के साथ टॉप नॉच एडुकेटर्स आपको मिलेंगे जो कि CMA के फील्ड में एक्सक्लूसिव हैं. इवॉल्व बैच जो कि इंटरमीडिएट ग्रुप 1 का है, जो कि 9 मार्च से स्टार्ट हो चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिसंबर 22 अटैम्प्ट के जो भी स्टूडेंट है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. एडुकेटर्स अगेन मैंने बात किया कि सारे इंपॉर्टेंट फैकल्टीज़ है, सारे यहाँ पे आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा. ग्रुप 2 के लिए भी इवॉल्व बैच जो कि 10 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि दिसंबर 22 अटैम्प्ट में देना चाहते हैं. एडुकेटर्स कहना नहीं है, सारे CS हैं, प्रोफेशनलिटी से पूरा भरा हुआ है यहाँ पे. सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो अनअकैडमी लर्नर ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पे मेरा कूपन कोड दैट इज CMA भक्त 45 कूपन कोड ज़रूर लगाएं, 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा. सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हो तो लाइव इंटरेक्शन क्लासेस मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, रिकॉर्डिंग लाइव लेक्चर्स मिलेगा, अपडेटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर मिलेगा और बहुत सारे एम्पल ऑफ बेनिफिट्स भी मिलते हैं. सब्सक्रिप्शन 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ कर लेना और मेरा कूपन कोड ज़रूर से इस्तेमाल कर लेना, जहाँ पे आपको 10% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा. ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है. Listed and unlisted because of the size of the operations. The proposed amendments which aims to bring that independence and autonomy with members who are not members of those institutes also becoming a part of the disciplinary committee, I think we are only matching ourselves with global best practices. And there's nothing to worry if we are undermining our institutions on. So ICAI, during consultations, wanted this provision. In course of review of quality audit reports, sometimes the QRB comes across irregularities in audit reports. Through this amendment, the QRB may refer such matters to disciplinary directorate to proceed against members of such auditors. So it is a provision which gives one more window for recommendation from the QRB for action to be taken. Sir, I think it was member, I can't see whether he's here, Thomas Charikadan. Oh, yes, sorry. He had raised this question, sir, about bar councils and also these institutions now which are getting ready, put them on, and then they become the member of bar council. Whereas here, that function, inclusive of profession, inclusive of discipline, everything is done by this one monolith. That CA firms should be aspiring to be big. Global Big Four is there. Can India not have a equivalent of a global Big Four? Honorable Prime Minister himself has been, while discussing with the institutions, engaging with them, saying, is it not possible for India to aspire to have one in the Big Four? So the government has enabled institutes, sir, to enter into mutual recognition agreements and MOUs of institutes from various different countries
through various cabinet-approved approvals. The amendments like registration of firms will allow the audit firm to grow. So we have enough facility and provisions which we have brought in, wherein the big global firms can also be matched up by Indian firms which can come in. के उचित amendment है. इससे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी और कंपनी सेक्रेटरी सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे और देश के इस डेवलपमेंट के रफ्तार में ये सब ऐसे प्रोफेशनली बेटर रहने में हमारे डेवलपमेंट का अच्छा स्पीड मिलेगा.